এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। This is AGT Live 24/7. চলো ভিতরে এখানে না তো না বাইরে বাইরে একটা ইও দেবে गवर्नमेंट 4 लाख दे रही है लेकिन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ और भी कुछ जनता को थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू আমি মেট্রো বাসে আমার ছোট আপনি কি বলেন আমি প্রথমবার এমএস একটা কাজ করি আর কি টুকিটাকি আপনি এখানে কাজ আছে उसका बच्चा छोड़ लो उसको डाले आई थिंक द किलो मेरे तरफ से आगे आई कट আর কিছু দরকার থাকলে আপনি বলেন সাবস বাবু ক্লিয়ার নিয়ে নাইস মাসেজ Jamaat Islami, they have made the head of the police SP's office, and they have this allegation that unnecessary communal things are happening in Tripura. Is Tripura becoming a experimental ground that way, where we never had such communal violence? No, we've had communal violence, but Religious, I am telling you. every time we've had communal violence, there's been a politician behind it. So whether the politician was in BJP or in Congress or CPM, politicians are always behind communal violence. What happened in Gandachara also, what has happened here also near Ranir Bazar side, it is not right for Tripura. I think Tripura needs to develop as a state, and when the citizens of India, irrespective of the religion, whether they are Muslim, Hindus and Christians or Buddhists, if they start fighting with each other in the name of God, then I think something is terribly wrong. Whoever desecrated the statue of Kalima should be arrested, whether he's a Hindu or a Muslim. If it was a criminal, is a criminal. But for groups of people to go and beat up every Muslim family is also wrong, and the law should take its own course. Criminals should be arrested, but people who use religion to vandalize people's homes is absolutely wrong. And I think मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, we are India. India is different from Pakistan. India is different from Bangladesh. We should not try to copy Bangladesh and Pakistan and make India into another Pakistan or Bangladesh. So I think in Pakistan, in Bangladesh, the most shameful part is that they cannot protect the minorities. Bangladesh cannot protect the Hindu Bengalis, the tribals. Pakistan could never protect the Punjabis, the Sikhs, the Hindus in Pakistan. In India, we are a country of Ambedkar, we are a country of Gandhi, we are a country of Swami Vivekananda, we are a country of tolerance. So I think we should also allow the minorities to develop and to become more modern, but not bully them or beat them up because one or two people spoil the name of the entire community. So I think that is the most important message, and we are suffering from floods. And this is not the time that we engage in communal violence. I think whoever is the culprit should be arrested, and no community should be targeted in the name of the religion. Thank you. Another concern is today also we have seen the Bangladeshi in Tripura. Today also 4 persons have been arrested despite the scenario, such flood. What does it speak about the border manning? How do you see it? No. Bangladeshis should not be allowed. All these illegal Bangladeshis who are coming into India, we cannot allow them to we cannot make India into a second Bangladesh. And if Bangladesh has problem, we can send them food, we can send them relief material, but we cannot import their people into our land. That is unacceptable. And for every 10 people being arrested, 100 are crossing over. So I think the government of India needs to take a stern measure, because change of population is dangerous for our country and for our internal security also. Today, if India has to be protected, then Tripura has to be protected from illegal migration happening from Bangladesh. I'm very clear about that. Thanks. বন্যাতে কবলিত মানুষের পাশে
দেখতে আসেনি আমাদের মাননীয় সাংসদ পূর্ব ত্রিপুরার। তো এই বিষয়ে কি বলবেন? বিরোধীদের সব এই অভিযোগটা রয়ে গেছে। देखिए मैं इसमें पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ। MP इज़ ऑलरेडी इन अगरतला। আচ্ছা, MP शायद कल शांतिर बाजार भी जारी, वो जहाँ में 7 लोगों का मृत्यु हुआ है, गोमती भी जा रही है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए अनाउंस भी किया है। मैं सिर्फ ऑपोजिशन को बोलना चाहूँगा कि ये टाइम पॉलिटिक्स करने का नहीं है। असेंबली में सवाल उठाए, मैंने भी क्वेश्चन किया है जहाँ में काम ठीक से नहीं हुआ है। तो पॉलिटिक्स के लिए टाइम होता है और स्टेट को एक रखने के लिए एक टाइम होता है। मैं भी पॉलिटिक्स कर सकता था कि ट्राइबल इलाका में इतना क्यों नहीं हुआ, यहाँ में क्यों इतना हुआ, लेकिन ये टाइम पॉलिटिक्स का नहीं है। इस समय बंगाली भी पेन में है, ट्राइबल भी पेन में है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब को दर्द हो रहा है। ये टाइम मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, तो मैं पॉलिटिकल सवाल का जवाब राइट टाइम में दूंगा। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता कि आपको भी फ्लड्स को, क्योंकि ये जो हुआ है ये नेचुरल डिज़ास्टर है, तो इसमें हमको थोड़ा लंबा सोचकर प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।